Students, good morning to all of you. So welcome to my channel, my target 100%. I think all of you must have seen my last videos. So who can say what are the last video? Recall velocity and conservation of linear momentum. Okay, today topic is circular motion. I think all of you are very much familiar with circular motion. When a body moves in a circular path, it is known as circular motion. Okay? You see the fans rotating, okay? Then the blades of a fan, and that one is the motion of a flywheel around the axle. Electron revolve around the nucleus, motion of planets around the sun, motion of satellites around the planets. These are the common examples of circular motion. But when a body is uniform circular motion means when a body moves in a circular path having constant speed, then it is known as uniform circular motion. But one thing happens in uniform circular motion. Suppose this is circular motion. All of you write circular motion. When a body, this is circle, this is center O, suppose this is a radius. When a body is here, what you are observing? Body is here, time is equal to 0. After certain interval of time, when a body reaches is here, suppose B, and time t is equal to t, it makes angle theta about the axis of rotation subtended by the center of the circle. बॉडी यहाँ था कितना टाइम में? 0 टाइम में. बॉडी यहाँ पहुँच गया t टाइम में, तो ये बनाया एंगल थीटा. ये जो थीटा हुआ AOB हो गया थीटा. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्म्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन. जब बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमता है उस टाइम में क्या क्या टर्म आपको मालूम होना चाहिए. आप सब जानते हो, जो काइनेमेटिक्स पढ़े हो, जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. डिस्प्लेसमेंट व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए कर्व पाथ और स्ट्रेट पाथ हैविंग पर्टिकुलर डायरेक्शन, द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. इफ द टर्म एंगल what you will use, it is angular displacement, angular velocity, angular acceleration. So AOB is equal to theta, that is known as angular displacement. This is known as angular displacement. Okay, this is known as angular displacement, AOB. But if you are writing uniform circular motion, that means body having constant speed. Body having constant speed. Okay, then come to point. Angular displacement. What is angular displacement? Angular displacement means angle described by the particle. ये particle की और body यहाँ पहुँच गया, ये arc हुआ, ये B क्या हुआ ना arc. Suppose S हुआ, यहाँ से body यहाँ तक गया, distance cover किया S, वो arc. So theta is equal to S by R. Angle described by the particle about the axis of rotation in a certain interval of time. Angular displacement is measured in terms of radian. Angular displacement unit is radian. Okay. Then come to point. We know that 180 degree is equal to pi radian. 2 pi radian is equal to 360 degree. So angular displacement dimension formula m naught, L naught, T naught. So it is a dimensionless quantity. Dimensionless quantity. This is about the angular displacement. Okay. Similarly, now term is, ये बेटे किसका बारे में बताए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ये हुआ. अभी हम लोग पढ़ेंगे
angular velocity. You know, velocity means rate of change of a displacement. Displacement by time is equal to velocity. But here, the angular displacement by the time is known as angular velocity. वहाँ था velocity is equal to displacement time. यह angular velocity हो गया. तो आप क्या लिखोगे? हम इसको इरेज कर देते हैं. Due to lack of space. So come to point. Angular velocity. Angular velocity डोनेट किया जाता है ओमेगा. ऐसे ही पढ़ेंगे ओमेगा. Omega is equal to theta by t. Okay, that figure always you draw. This is center, radius and body A. It is B. T is equal to time 0. T is equal to t. Okay, with respect to center it is theta. So omega is equal to theta by t. Theta by t means it is the angular displacement. Angular displacement by time. So unit becomes क्या हो जाएगा? Unit radian by second. Similarly dimension बताओ m naught, l naught, t. ओके, ये हो जाएगा t इनवर्स. और आप इसको लिख सकते हो ओनली t इनवर्स डायमेंशन. The rate of change of angular displacement per unit time about the axis of rotation is known as angular velocity. Okay. Now question is, suppose time is बड़ी कहाँ था? यहीं पर था. टाइम कितना था? t0. टाइम t0 सपोज आप अभी जो टाइम है उसको t0 मान सकते हो. तो आफ्टर सपोज अभी कितना है? 10:20, 10:25 में यहाँ पहुँचे तो टाइम धीरे धीरे बढ़ते जाएगा. तो टाइम बढ़ते गया तो ये सपोज डेल्टा टी टाइम में पहुँचे तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा थीटा. 8 में पार्टिकल यहाँ था, टाइम इतना था. बी में पार्टिकल यहाँ पहुँचा, कितना टाइम है? डेल्टा टी टाइम में. एंगल बनाया डेल्टा थीटा ओ आर. यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ हो गया, ये हो जाएगा डेल्टा एस. सो वहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना? ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. When angle made by the particle is small, that will take small interval of time. That's why you will tell omega is equal to delta theta by delta t. Similarly, angular acceleration, this is angular velocity. Suppose you will write the angular acceleration. This is alpha. So angular acceleration is equal to, जैसे velocity by time acceleration, angular acceleration d omega by, you can say d omega by dt. So d omega कितना हो गया? बताओ. d omega हो गया, d omega कितना था? d theta by dt. ये हो गया dt. So ये हो गया d square theta by dt square. The rate of change of displacement, double displacement हो गया. यहाँ double derivative of displacement with respect to time but square of time. That is angular acceleration, rate of change of angular velocity. Then come to point. इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ये हो गया यूनिट. डायमेंशन कितना हो जाएगा? डायमेंशन हो गया t-2, बिकॉज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन नहीं है. जो यहाँ सेकेंड स्क्वायर हुआ t स्क्वायर, जो सेकेंड खाली रहा t1. देन आप जो देखते हो द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी हम बता चुके हैं. टाइम टेकन बाय द बॉब इन ए सिंपल पेंडुलम कितना था? सपोज ये सपोर्ट है, ये थ्रेड है, ये बॉब लगा है. ये बॉब को यहाँ से यहाँ तक लिए, सपोज ये पोजीशन देखो, ये एंगल स्मॉल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होना चाहिए. तो ये O हुआ, ये A हुआ, ये B हुआ.
बॉडी यहीं से कि यहाँ तक लाए और छोड़ दिए। जहाँ से शुरू किए थे वहाँ तक जाके फिर आ गया तो एक ऑसिलेशन हुआ। ओके, सो वो एक ऑसिलेशन के लिए देखे गया फिर आया, एक ऑसिलेशन हुआ, उसको रोटेशन बोलते हैं, ऑसिलेशन से बोलते हैं। सो इट इज़ द टाइम टेक नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, बट टाइम टेकन बाय द बॉब to complete one rotation is known as time period. So time period and frequency both are inversely proportional to each other. So how can you write T is equal to 1 by f? फ्रीक्वेंसी को f लिख सकते हो और कोई के n लिखता है वो भी लिख सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ रोटेशंस और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। सो टाइम टेकन, सो f इज इक्वल टू 1 बाई टी। सो अभी रिलेशन क्या हो गया ना, एफ टी इज इक्वल टू 1, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। व्हाट आर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का यूनिट सेकेंड, डायमेंशन टाइम टी, फ्रीक्वेंसी हो गया हर्ज, तो फ्रीक्वेंसी का हर्ज बोलते हो, 1 बाय टी हो गया और सेकेंड इन्वर्स और साइकिल्स पर सेकेंड इन्वर्स। देन कम टू पॉइंट, इसका डायमेंशन कितना हो गया टी इन्वर्स, उसका खाली टी, इसका टी इन्वर्स। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स एंड कॉमन टर्म्स associated with uniform circular motion or circular motion. Then what are the other relations when a body moves in a circular path? देखो बेटे, ऐसे जाना चाहिए लेकिन नहीं जा रहा है, देखो ऐसे करके जा रहा है तो ये टेंजेंट हुआ। फिर यहाँ आया तो ऐसे जाना चाहिए, नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है। फिर सपोज बॉडी यहीं पर आया, ऐसे जाना चाहिए, नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है। बॉडी यहाँ आया तो ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जा रहा है। बॉडी यहाँ आया, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जा रहा है। एट ईच मोमेंट डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन मीन्स टेंजेंट, डायरेक्शन चेंजेस मीन्स वेलोसिटी चेंजेस, velocity changes means acceleration changes when a body moves a uniform circular motion. That's why uniform circular motion is accelerated motion, but linear uniform circular motion, but linear motion is not accelerated motion, it is fixed. लीनियर मोशन में क्या होता है, डायरेक्शन फिक्स होता है, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंजेस होता है। क्लियर? ओके, अभी आओ देखो, इसमें जब बॉडी था, यहाँ बॉडी था तो डिस्टेंस कितना हुआ, रेडियस आर। ओके, यहाँ भी पहुँचा रेडियस आर, यहाँ भी पहुँचा रेडियस आर, यहाँ भी पहुँचा रेडियस आर। ए सपोज यहाँ ए दिए, बी सी डी ई, ओ ए इजिकल टू ओ सी इजिकल टू ओ डी इजिकल टू ओ ई, सब केस में रेडियस इतना, रेडियस कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ एंगल बॉडी सपोज यहाँ है तो ये बहुत छोटा डेल्टा थीटा 1 हुआ, बॉडी यहाँ पहुँचा, एंगल बढ़ते गया तो एंगल बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हो गया 90 डिग्री, यहाँ तक आ गया 180 डिग्री, यहाँ तक आके 360 डिग्री हो गया। तो जो एंगुलर वेलोसिटी था ओमेगा इजिकल टू थीटा बाय टी। ओके, टाइम टेकन थीटा को हम लोग लिए 2 पाई, ये टाइम टेकन को कैपिटल लिए, टाइम पीरियड तो 2 पाई बाई टी, 2 पाई इंटू 1 बाई टी, तो इसमें कर दिए 2 पाई 1 बाई टी मीन्स एफ। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अनदर रिलेशन, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी, दिस इज द अनदर रिलेशन। ओके, नाउ most important is what is the relation between linear velocity and angular velocity। पहले वही चीज को फिर देखना बेटे, ये जो फिगर लिए इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एवरी टाइम यू मस्ट ड्रॉ द डायग्राम, एवरी टाइम। सपोज दिस इज द सर्कुलर सर्कल, ओके, दिस इज सेंटर ओ, दिस इज ए, रेडियस पार्टिकल यहीं पर था, टाइम कितना 0, पार्टिकल अभी बी में पहुंचा कितना टाइम में, सपोज टी प्लस डेल्टा टी टाइम में कितना, ए आर्क हुआ सपोज कितना डेल्टा एस। व्हेन बॉडी रिचेस हियर इट मेक्स एंगल डेल्टा थीटा विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर। ओके, ये हो गया डेल्टा थीटा। ओके, सो नाउ आवर क्वेश्चन इज
find the relation between the linear velocity and angular velocity. Relation between linear velocity and angular velocity. मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा है, लैंग्वेज बोल देता हूँ. So what do you write? There are two methods. Consider a particle that moves in a circular path having radius r, velocity v, linear velocity o, center of the circle. When a body at A, at that time is equal to 0. When body reaches at B, that time is t plus delta t or delta t times. It makes angle theta delta theta. It is the language. Suppose you have problem in English or you have no capacity to write, तो क्या लिखना? From figure it is clear that O center of the circle, OA radius, okay, then AOB delta theta angular displacement, AB delta S arc, okay. So we know that omega is equal to, from the figure, delta theta by delta t. This one we know when time is delta t. But linear speed, this is angular speed. But linear speed, why you are right? Question is linear velocity, angular velocity, angular speed or velocity you can write. So linear velocity v is equal to delta s by delta t, equation 2. Because question is find the relation between linear velocity, I am repeating, and angular velocity. So angular velocity this one, linear velocity is this one. But from figure, theta is equal to s by r, that means delta theta is equal to delta s by r. So now delta s is equal to r delta theta. Then suppose this is the equation 3. All of you see and write. This is the angular velocity, this is the linear velocity. From figure, how much angle produced by the particle with respect to time, delta t you are getting. But r is the radius of the circle, it is constant, whatever the position of the particle may be. OA is equal to OB, AC, OD, whatever you are taking a name. Then come to point, using the equation 3 in equation 2. देखो V is equal to delta S by delta T. Delta S कितना हुआ? R delta theta by delta t. ना क्वेश्चन इज हम क्या बोले? पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक वो कांस्टेंट है, रेडियस यहाँ भी रहेगा, वो भी कांस्टेंट है. सपोज सी ए बी आर यहाँ से रहेगा तो ए बी आर, यहाँ से रहेगा ए बी आर. तो क्या लिखेंगे? तो आर कांस्टेंट हुआ इन केस ऑफ डेरिवेटिव और कैलकुलस. सो कांस्टेंट को अलग रखो तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. दैट मीन्स डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज हाउ मच? ओमेगा. सो इट इज आर ओमेगा. तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा. Equation 4 represents the relation between the linear velocity and angular velocity. But in vector form, if you write in vector form, v is equal to r into omega. Okay, this is the relation and question and answer. So next we have to solve one numerical. Suppose a scooter goes around a circular path having radius 10 meter with speed 30 meter per second. Calculate the angular speed of the scooter. Again I am repeating the question. A scooter goes around a circular track of radius 10 meter with speed 30 meter per second. Calculate the angular velocity. So angular velocity means this formula, v is equal to how much? Omega into r. So omega is equal to how much? V by r.
V कितना दिया हुआ 30, R कितना दिया 10, तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ जो 3 लिखे, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क का है, यूनिट नहीं लिखे तो नंबर कट जाएगा। तो 3 क्या हुआ रेडियन पर सेकेंड। ओके, इन दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस एंड राइट important points in your copy. Thank you, have a good day. कितने टाइम है?